Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your S.St teacher. We have started chapter 7 in history, and also we have studied some of the important topics related to this chapter. Yesterday we have studied about how the growth of prosperous urban centers promoted crafts and industries up to the 18th century, and also how do the names of different textiles tell us about their history. Okay, so today we are going to start our next topic, that is why the wool and silk producers of England protested against the import of Indian textiles in the early 18th century. Okay, and you have seen that Indian textile continued to dominate the world market till the end of the 18th century. Okay, so let's start our today's topic, why the wool and silk producers of England protested against the import of Indian textiles in the early 18th century. Okay, up to the 17th century, the flow of Indian cotton and silken clothes continued in full swing. You have seen that up to 17th century, the flow of Indian cotton and also wool silken clothes continued in full swing. आपने देखा कि 17th century तक जो इंडियन का जो इंडियन कॉटन था और सिल्कन क्लोथ था वो बड़े ही तेजी के साथ ऊपर की तरफ चढ़ रहा था और उसकी डिमांड भी बहुत थी. But in the early century, 18th century, but what happened suddenly but in the early 18th century, the wool and silk producers of England began to protest against. And after that, what happened? But in the early 18th century, the producers of silk and wool of England, they started to protest against the import of Indian textiles. Why they protested? There's also some reasons. First, initially, from starting, the English merchants had to buy Indian clothes in exchange for precious metals like silver, gold, which was not to the liking of the British government as well. We have seen that from earlier time they used to give us their silver and gold coins or gold or precious metals like gold and silver while exchanging their goods. इन द अर्ली क्या होता था जब इंग्लिश मर्चेंट्स जो थे हमारे यहाँ से जब सामान खरीदते थे तो सामान खरीदने के बदले में कुछ इम्पॉर्टेंट मेटल्स हमको देते थे, जैसे कि आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया. In the early 18th century, the textile industries had just begun to develop in England. अब क्या हो गया, इन द अर्ली सेंचुरी जो टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज थी धीरे धीरे इंग्लैंड में डेवलप होने लगी. Unable to compete with Indian textiles, the English producers wanted to secure market within the country by preventing the entry of Indian textiles. इसलिए वहाँ का जो टेक्सटाइल था वहाँ का ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने रोक लगाने की बात करी कि इंडियन टेक्सटाइल्स हमारे यहाँ नहीं आनी चाहिए. Forced by the above reasons and circumstances, the British government had to pass, बड़े ही फोर्स में आकर या प्रेशर में आकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक एक्ट पास करना पड़ा इन 1720 नोन एज द कैलिको एक्ट. उस एक्ट का क्या नाम था? कैलिको एक्ट.
As a result of this act, the use of printed cotton textiles, particularly the chintes, was banned. और उस एक्ट में क्या था कि जो हमारे यहाँ का जो छींट वाली प्रिंटेड थी उसको टोटली बंद कर दिया जाए. Thus, under government protection, the calico पेंटिंग इंडस्ट्री, और इसीलिए गवर्नमेंट के देख रेख में जो कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री थी वो क्या हो गई, बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड. धीरे धीरे इस तरह की इंडस्ट्री धीरे धीरे इंग्लैंड में डेवलप होनी शुरू हो गई. इनिशियली इंडियन डिजाइंस बिगन टू बी इमिटेड. अब धीरे धीरे वो लोग इंडियन डिजाइंस को भी नकल करने लगे. एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड ऑन वाइट मुस्लिन. और किस पर प्रिंट करने लगे, वाइट मुस्लिन पर. और वाइट क्लोथ इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडिया. और नहीं मुस्लिन पर अगर करते थे तो जो इंडिया से वाइट क्लोथ जाता था उस पर प्रिंट करते थे. The English scientists and engineers also came to the help of the industries. और जो इंग्लिश के साइंटिस्ट थे, इंजीनियर्स थे, वो लोग भी हेल्प के लिए आगे आए. द इन्वेंशन ऑफ फ्लाइंग शटल बाय जॉन के. उन्होंने किसका इन्वेंशन किया, फ्लाइंग जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल. द स्पिनिंग जेनी बाय जेम्स हारग्रीव्स. वाटर ट्राम्स बाय आर्कराइट. The mule by Samuel Gramphone. The power loom by Cartwright. The cotton gin by Whitney. The steam engine by Newcomen, and later on improvement in it by James Watt. Revolutionized the cotton textile industry and made it possible to produce cotton clothes in great quantities and cheaply too. धीरे धीरे उन्होंने नई मशीन लानी शुरू कर दी वेविंग के लिए, स्पिनिंग के लिए, और कई तरह के उन्होंने उपकरण बनाए. और इसको उन्होंने इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज्ड में उसको यूज करना शुरू किया. Textile industries and made it possible to produce cotton clothes in great quantity. और इस तरह से वे लोग कॉटन क्लोथ प्रोड्यूस करने शुरू किए, वो भी लार्ज क्वांटिटी में और सस्ते भाव में. However, Indian textile continued to dominate the world market till the end of the 19th century. लेकिन अभी भी हमारा जो इंडियन टेक्सटाइल थे वो अपनी बढ़ोतरी जो क्या कहेंगे उसको डोमिनेट किया, जो वर्ल्ड मार्केट को अभी तक डोमिनेट करता रहा टिल द एंड ऑफ द 18th century. The Dutch, the French and even the English trading companies continue to make huge profit out of this floriding trade. और इस तरह से डच भी, पोर्तुगीज भी और इंग्लिश भी धीरे धीरे अपने ट्रेड में बढ़ोतरी लाना शुरू कर दिया. Okay, so today only this much. Tomorrow we will discuss about decline of handicrafts in the 19th century. And so see here your homework. Do fill ups of chapter 4. Okay, beta.